of speaking in English, but unfortunately, you end up having a lot of trouble in your lives, and you think that English is merely your dream. अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखना एक आपका एक सपना है और अनफॉर्चुनेटली आप बहुत सारा लॉट ऑफ वर्क आप करते हो और आपके लाइफ में फिर ट्रबल आ जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से खत्म करें देन दिस वीडियो इज फॉर यू हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तानिया शर्मा इंग्लिश क्लासेस तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टफ ओके और मैं आज लाई हूँ आपके लिए 60 डेज challenge for improving and transforming your English skills to the next level. So yes guys, you heard it right. आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम 60 days का challenge करने वाले हैं जिसमें I will give you the most important strategies to learn English effortlessly and fluently. So here it is. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. मेरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको बेटर समझ आएगी. So here are few tried and tested recipes to be fluent in English and overcome the fear of talking. Number one trick is shadowing. It is a learning technique where you can listen to a text in your target language and then you speak it aloud at the same time as the native speaker. तो shadowing एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप कुछ भी पॉडकास्ट लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ कोई भी वीडियोस आप देख सकते हैं आपके किसी भी नेटिव स्पीकर की जिसको आप फॉलो कर रहे हैं नॉर्मली उनकी वीडियो देखना और उसको इंग्लिश में देखना और उसको रिहर्स करना लाउडली बोलना उसी टाइम जबकि वीडियो में जो बोल रहा है. फॉर एग्जांपल जब आप कोई मूवी देखते हो तो आपको जो जिसमें इंटरेस्ट होता है आप कभी भी कोई मूवी देख लो. जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आपको जो भी एक्टर जो भी एक्ट्रेस जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं आप उनको देखते हो और आप उनकी मिमिक्री करते हो एट द सेम टाइम. जब वो ऐसा बोले आप उसी टाइम उनको कॉपी करके बोले, उसी को ही हम शैडोइंग कहते हैं. टिप नंबर 2 इज स्पीड रीडिंग. The technique of speed reading helps you to produce the words, the sounds fastly and smoothly in your target language. Number 3 tip is mirror technique. Stand in front of the mirror and speak. The main aim of this exercise is to observe yourself, your body language, the way you handle the situation, the way you speak in front of mirror, your face, your expressions, etc. It really boosts your confidence and it also helps you to improve your expressions to the next level. So mirror technique is also mandatory. Tip number 4 is tongue twisters. Tongue twisters help you in clearer pronunciation, clearer speech patterns, and also make you aware of some sounds that may pose a challenge for you. Number 5 tip is image training. Rehearse phrases or vocabulary you would like to use. For example, if you want to go to a restaurant, you can practice some sentences beforehand. It really boosts your confidence. Number 6 tip is record your voice. You just need to record your voice. Choose any particular topic, set a timer and speak. Listen to your conversation and then
you will realize, you will notice that you are able to point out your own mistakes just by hearing your conversation. You will able to realize all the things that you may not able to realize earlier. So रिकॉर्ड योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहूंगी इस वीडियो के थ्रू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये: स्पीकिंग इज अ प्रैक्टिकल थिंग। फॉर दिस, no amount of writing, reading, or listening can able to embrace it. Okay, it demands speaking and speaking and lots of speaking. आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर मास्टरी करनी है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो जर्मन लैंग्वेज हो, यू जस्ट नीड वन थिंग, दैट इज स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। जैसी भी है, टूटी फूटी इंग्लिश है, जैसे भी आपको आपको जस्ट बोलना है। ये नहीं सोचना कि कैसे आप बोल रहे हो, टूटी फूटी इंग्लिश जैसे भी है वो आप बोलो। ओके, ये था मेरा आज का टॉपिक, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और मुझे इसी तरह आपने वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये जो वीडियो है वो हर उस घर तक पहुंचे, फॉर दोज स्टूडेंट्स, फॉर दोज persons who are really interested in learning English। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ अपनी जर्नी, मैं आपसे शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंस, और मैं सच में चाहती हूँ कि आप सभी इंग्लिश सीखें और बोलें फ्लुएंटली। तो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट, और मेरी जो बातें हैं आपको सीखनी है और उसको अप्लाई भी करनी है अपनी डेली रूटीन्स में। ओके, तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि जो मेरी न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाए आपको। कीप शाइनिंग, कीप सपोर्टिंग मी। मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा फॉर the most important and informative content like this. Thank you. Bye bye.